Yes, so let's start from the second sum again. I'm reading the sum. The vapor pressure of ethanol and methanol are given 44.5 millimeter of Hg and 88.7 millimeter of Hg respectively. So these are the pure vapor pressure of the two solutions. An ideal solution is formed at the same temperature by mixing 60 gram of ethanol with 40 gram of methanol. Calculate the total vapor pressure of the solution and the mole fraction of methanol in the vapor state. Okay. So calculate. अच्छा, see now. So, vapor pressure जब भी हमें calculate करना होता है, we have to find out the mole fraction. This is the first thing, because as per Raoult's law, PA, that is partial pressure of any substance, is equal to P naught A into XA. X is the mole fraction. So whenever you are given the weight of the substance is given, convert into number of moles. Weight से हमें number of moles आएगा, नंबर ऑफ मोल से हमें मोल फ्रैक्शन आएगा. सो हमने क्या किया, मोल्स ऑफ इथेनॉल पहले निकालना है. मोल्स ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू वेट ऑफ इथेनॉल विच इज गिवन 60 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथेनॉल दैट इज 46. सो 60 अपॉन 46 करोगे तो मोल्स ऑफ इथेनॉल आ जाएगा 1.304. सिमिलरली मोल्स ऑफ मिथेनॉल, weight of methanol which is given 40 and molar mass of methanol which comes 32. So 40 upon 32 करोगे तो 1.250 moles of methanol आएगा. So सबसे पहले आपको number of moles of ethanol and methanol find out करना है. If you are done with this, then show me the thumbs up so that I can move on to the next part. Aditi, I'm recording this session for you. If you get disconnected repeatedly, then I'll send you the recording. Just let me know later. Okay, so you have found out the number of moles. Now we need to find out the mole fraction. So ethanol ka mole fraction will be number of moles of ethanol divided by the total number of moles of both of them. So 1.304 upon 1.304 plus 1.250 gives you 0.51. Once you get one of the mole fraction, the other one you will get by 1 minus करके निकलता है, because you know that XA plus XB is equal to 1. XA हमारे पास आ गया, so XB will be is equal to 1 minus XA. So that's 0.49. So we got the mole fraction of ethanol, we got the mole fraction of methanol. Both mole fractions we got it. Write it down. So in the question we have the pure vapor pressure of ethanol, pure vapor pressure of methanol. Both ka pure vapor pressure we have. We got the mole fraction of both the solvents or both the liquids. Then go for the partial pressure of ethanol. These are given in the question. Okay? You can write it down, or you must have noted down in the beginning. If you have not, then you can write it down right now. These are given in the question. The pure vapor pressure of ethanol and pure vapor pressure of methanol are given. So partial pressure of ethanol will be, as per Raoult's law, the partial pressure of ethanol is P naught ethanol into X ethanol. Pure vapor pressure of ethanol into mole fraction of ethanol. Both of them we got, so we can find out the partial vapor pressure of ethanol that is coming 22.69 millimeter of Hg. Don't just copy. I hope you are understanding what is it. Always remember the Raoult's law. PA, that is partial pressure of any substance, is equal to P naught A into XA. That is the pure vapor pressure of the substance into mole fraction of the substance. That's the Raoult's law. So somehow we need to get the mole fraction. Whatever information is given from there, we have to get the mole fraction. And then P naught A, if hamare paas hai, so we can find out the partial pressure of the substance. Similarly, PCH2OH, partial pressure of methanol nikalo, P naught CH2OH into XCH2OH, both of them are given. This is given and this we found out just now. So it's coming 43.46. Do the calculation. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं है ना? एनसीईआरटी के नहीं है. I'm giving you some extra questions. मैम अगर एनसीईआरटी करेंगे चलेगा ना? सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के है, तुम ये क्वेश्चन करके एनसीईआरटी खुद से ट्राई करो. सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, सिर्फ नंबर्स अलग है. सो इफ यू डू दिस क्वेश्चन एंड ट्राई एनसीईआरटी, यू विल गेट इट. अगर नहीं मिला तो मुझे बताना, फिर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन नहीं मिलेगा वो मैं करा दूंगी. बट यू हैव द सेम क्वेश्चंस, ओनली फिगर्स आर डिफरेंट. अच्छा, सो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? दोनों का पार्शियल प्रेशर हमारे पास आ गया है.
total vapor pressure will be the addition of both of them. So add kar do, you get the total vapor pressure, 66.15 millimeter of Hg. इसी क्वेश्चन में और एक सब क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन द वेपर स्टेट. वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन कितना है? हमने जो निकाला एक से, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन द लिक्विड स्टेट. लिक्विड में कितना है? नाउ सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव गॉन टू द वेपर स्टेट आल्सो. उसमें मोल फ्रैक्शन कितना है वो निकालना है. उसका फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर. ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन द वेपर स्टेट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर. प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला. आई हैव गिवन दिस इन द थियरी आल्सो. इफ यू रिमेंबर, y से डिनोट करते हैं हम, ya and yb. so mole fraction in the vapor state is denoted by ya or yb. That is equal to partial pressure of the object or substance divided by total vapor pressure. तो partial pressure of methanol हमें मिला है 43.46. ये देखो, ठीक है, divided by total vapor pressure हमें मिल गया है 66.15. So that comes up to 0.657. This is mole fraction, so it won't have any unit. Remember, it is a mole fraction, so it won't have any unit. Done, everyone? Right, Vaidehi, Rishi, Priyanshu, Ananya, Aditi, Saksham, everyone is done. Very good. So I hope you do not have any problem in this. Let us go for the next sum. This is the third sum. Vapor pressure of pure, yes, tell me. मैम अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वेपर स्टेट निकालना हो तो, हाँ, तो इथेनॉल का पार्शियल प्रेशर लेते थे. अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकालना होगा तो न्यूमरेटर में हम इथेनॉल का पार्शियल प्रेशर लेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर. सो इथेनॉल का पार्शियल प्रेशर होता है 22.69 अपॉन 66.15. दैट्स ऑल. ठीक है प्रियांशु? मतलब 1 माइनस 0.657 वो भी करोगे तो आ जाएगा. अगर 1 माइनस 0.657, यस यस, वो भी करोगे तो आ जाएगा. करेक्ट. ठीक है, ओके मैम. Let's go for the next sum. Now ये sum आपको खुद को क्लिक होना चाहिए. ठीक है, सब लोग सोचो इसके बारे में. मैं बोलूंगी नहीं इसको, थोड़ा सा मैं नीचे ले लेती हूँ. देखो, vapor pressure of pure liquids A and B are 450 millimeter of Hg and 700 millimeter of Hg. This is given pure liquids. The vapor pressure of pure liquids. Pure आते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए not, P naught. ठीक है, so it is P naught A and P naught B are given to you. So write it down. P naught A is equal to 450 millimeter of Hg. P naught B is equal to 700 millimeter of Hg at 350 Kelvin respectively. Find the composition of liquid mixture and also vapors if total vapor pressure of the total vapor pressure is 600 millimeter of Hg. That is PT. Total vapor pressure is denoted by PT. PT is equal to 600 millimeter of Hg. Okay. So हम लोग क्या जानते हैं? PT is equal to क्या होता है? Total vapor pressure is equal to क्या होता है? बोलो, PA plus PB. So please write it down. PT is equal to, as per Dalton's partial pressure law, we know that PT is equal to PA plus PB. Again PA and PB को हम लोग क्या लिख सकते हैं? As per Raoult's law. ठीक है, PA can be written as P naught A into XA. Please write it down. As per Raoult's law, PA can be written as partial pressure of any object is equal to pure vapor pressure of that object into mole fraction. So P naught A into XA plus PB is equal to हम लोग लिखेंगे P naught B into XB. ठीक है, P naught B. मोल फ्रैक्शन निकालना है क्या? Yes. Now the thing is that कि यहाँ पे और कुछ दिया ही नहीं है. ठीक है, और कुछ दिया नहीं है, तो आप हम क्या कर सकते हैं बोलो? मैम XB को 1 माइनस XA कर सकते हैं. वेरी गुड. XB को 1 माइनस XA करेंगे. क्यों? बिकॉज देखो PT हमारे पास है 600, P naught A हमारे पास है 450, P naught B हमारे पास 700. ठीक है, तो अगर हम XB को 1 माइनस XA कर देंगे, so we will have only one unknown, so we can get the value of XA. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? We will have only one unknown, we can get the value of XA. So XB को XA से replace कर दो and put the values of everything. This is 600. Pure total vapor pressure is 600 is equal to 450 into XA
450 into XA and P naught B is equal to 700 into 1 minus XA लिखो इसको plus 700 into 1 minus XA. Now when you solve it, you will get the value of XA because now we have only one unknown out here. ठीक है? So पहले 700 and into 1 minus XA को multiply कर दो and then solve it, you will get the value of XA. It's a very simple calculation. Please do it. I'll show you also, but you can do it on your own as well. देखो, very simple calculation. 700 is a constant term. Get it this side. 600 minus 700, which will give you minus 100, and this will give you minus 250 XA. Minus minus cancel होके XA का value आ रहा है 2/5, that is 0.4. XA अगर 0.4 आ गया, XB will be 1 minus 0.4, that is 0.6. So, mole fraction of A in vapor phase will be I A is equal to XA into P naught A upon PT. Mole fraction of A in vapor phase. Vapor phase में mole fraction क्या होता है? PA upon PT. That is the formula. ठीक है? PA upon PT. And PA is equal to क्या होता है? P naught A into XA. So PA को सिर्फ मैंने P naught A into XA से replace किया है, बाकी कुछ नहीं किया है. देखो YA is equal to अभी मैंने क्या बोला था आपको, मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल प्रेशर. नाउ पार्शियल प्रेशर यहाँ पे PA होगा, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन और लिखना था और कुछ नहीं. YA इज इक्वल टू PA अपॉन PT लिखो एंड PA को रिप्लेस करो P naught A into XA से. सो आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ पे मैंने एक ही स्टेप में किया है. ठीक है, यू जस्ट राइट इट डाउन. YA इज इक्वल टू PA अपॉन PT एंड PA शुड बी रिप्लेस्ड बाय P naught A into XA. नाउ यू हैव योर P naught A, XA भी आपके पास है, PT भी आपके पास है. पुट कर दो, कैंसिलेशन करो, 0.3 आएगा. सिमिलरली 1 माइनस 0.3 करके y भी निकाल सकते हो, नहीं तो वापस सेम मेथड से आप y भी निकाल सकते हो. इट विल कम 0.7. Understood everyone? Right, Priyanshu? Okay, Vaidehi. Okay, Rishi. I hope you have completed also. So these type of sums will be coming from Raoult's law. I will be uploading one worksheet which will contain 5 sums on the same topic so that you practice and you be comfortable on this topic. Next class, that is tomorrow, we are going to start with ideal solution and non-ideal solution. ठीक है? That is a theory, and उसके बाद हम लोग start करेंगे colligative properties से. So I will upload one more worksheet on based on these sums. Do that on your own and do the NCERT sums also in text question if any on the same topic. If you have any doubt, you can ask me. But just do the sums for feeding this thing into your mind properly. Do the sums. If you don't do it on your own, you will not get any doubt. If you have doubt, you can ask me. So I'm ending this meeting today. Okay, only these 3 sums were there for today's topic. Tomorrow we will start with the next theory. Okay, chalo. This lecture I will be uploading in the YouTube, so you can just go and see there. Aditi, you were disconnected number of times, so you can go to the YouTube and you can see this lecture again. Okay, so chalo, meet you tomorrow then. Tata, and have a nice day. Thank you, ma'am. Yes, Priyanshu. Yes. Ma'am, we have a YouTube channel. Yeah, we have a YouTube channel. I'm sending you the link. I'm sending you. Okay? Yeah. Okay. Okay.